Can anyone introduce the batch? All of your PG students? Yes, sir. प्रभास बर्मन नहीं है, प्रभास रंजन होगा. Yes, ma'am, please. Hello. Hello. A very good morning, ma'am. Myself, Avinash Sharma. I'm working in Piramal Pharma as the EHS executive, and I'm going to introduce my batch of postgraduate diploma in environment management. There are multiple students from different domains. Some of the people are also coming from the environment education. Some of the PhD in environment, like Dr. Tamot Singh Rana, he is PhD from Allahabad University. He is also a participant. And multiple people are from engineering or environment, health and safety background, working in different industries for environment, health and safety domain. And I myself working in Piramal Pharma in environment, health and safety domain only. And we have some students of MPPSC aspirants also, like Astha Tiwari, Ankit Ketki, and multiple students are there. And some of the government officials we also have in our post in environment management means student lobby. Some of the government officials are also some are from Bhopal Nagar Nigam senior engineers, and some are from NTPC. They are working as a manager in NTPC renewable energy business development part. So it is like a short, brief discussion, brief introduction of my batch currently in postgraduate diploma in environment management at IIFM. Thank you, ma'am. It's a very diverse batch. It will be very interesting to interact with you guys. So I would expect this session to be a little interactive in terms of I will be covering some concepts, and I'll be expecting to be a little participative in the approach. I'll just be starting with the. I'm not able to share my screen or show any PPT. Just giving me a message, host is disabled participant screen sharing. Okay, ma'am. So can you please enable the content? Okay, ma'am. Please wait. So, to start with, research is a very beautiful domain in many ways. It starts with a question or a research problem at hand. So, since all of you are working professionals, you would be day to day encountering some issue or the other, which needs like some of you might be encountering a business process re-engineering problem. Some of you might be seeing a day-to-day research question which needs an answer. And for those of you who are working in the core environment domain, there are many burning questions which are the need of the hour in terms of how to design a better process, how to have what on ground, what action doesn't work on ground. So these are some questions which sort of require some kind of an inquiry. So anything that needs an inquiry, sparks the interest of the subject or research, right? So, but then, how to start, where to begin, right, is the question. So, the area of scientific research has many ways to, to initiate this whole process of the inquiry into what is going on, number one, and we can actually examine what exactly is going on. So, understanding, you would be seeing all these reports on the internet, which talk of the status of the shares today. All these news articles that say what is the status of the weather today, how is the climate, or how is climate likely to be in times to come. So if you see all these number reporting, it's basically describes a phenomenon that is going on, right? So that is one kind of a research, right? But then there are some questions which need lots and lots of introspection. So lots and lots of getting into or drilling into the details. So one part of research is just reporting what is happening. Another part of research is what might work, right? Or what has worked in the past, right? So there are various research designs and various ways of pursuing research, right? So yes, now I'm able to share my screen.
So if you see research methodology as a subject, it actually, is the science of this reasoning or thinking or the process by which we can, understand the methods of scientific research. Are you able to see the PPT? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Can you make it as a presentation mode, please? Are you able to see? Okay. So are you able to see it on full screen? Yeah, ma'am. Yes, yes. Perfect. So if you see the world of scientific research, there are traditional ways of acquiring knowledge. That is like, through imperialism, through intuition, through authority, or through rationalism. But there is another way of scientific research that is driven by pure science, right? So like, I have certain assumptions in which, I try to discover what is happening, what is the reality. We have this experimental and instrumental research by which we try to measure certain metrics and define the characteristics. And then if you see the basic sciences, right? So they're like, all driven by the logic of discovery and logic of justification. So like, in that way, the scientist will be somebody who has some curiosity and patience, and then, tries to like, drill into various methods of like, the various scientific inquiries. Like, if you see the whole science of research, it is driven by, I need to describe something, I need to explain what is going on. I want to predict what will happen if this is happening right now. Or I would like to control some phenomena that is actually going on. So like if you see like, ways of science of knowing, one way is like, belief system. Like, I have, there are several like, sort of previous literature or beliefs which like, drive what is known, actually known, or what is known till now, right? Another thing is logic. If you see basic sciences, they're all driven by logic, right? So if you see a physicist will see the phenomenon of things like, ball falls down, there is a law of gravity, right? And then there is a scientific inquiry. That means I need to look for an empirical evidence. So if you see all basic sciences, whether it be mathematics or whether it be physics, whether it be biology, or these interdisciplinary new sciences, which are bioinformatics, biology plus information technology, bioinformatics, neurology plus informatics, neuroinformatics, medical evidences and other things, they are all part of the scientific inquiry process. And science is the only way by which I can, define something which has an explanation, which is testable and can be also verified. So if you see basic sciences, they have evolved over years and years of know-how. And if you see the scientific literature, that has also grown in volumes in the same proportion, right? So what do we examine? We examine like, what is a fact, right? So like, fact, what becomes a fact is something that is repeatable. If you see the sun rises from the east, it rises from the east for quite some time now, right? And then, it becomes a fact that, aisa hi hota hai, this is how it happens, right? Another thing is driven by the hypothesis. That means I like, formulate an hypothesis. Like if you go back to your class 10th physics class book, or class 11th physics class book, for those of you who have studied science, like, PV equal to RT, pressure and volume are inversely proportional to each other, right? So laws, they are like, generalizations of the phenomena. And then there are theories. So if you see all science, it is governed by well-established theory, explanations of certain natural world phenomena. And if you see Prakriti, apne aap mein apne niyam se chalti hai, there are laws and inferences and tested hypotheses which generate all the new theories or feed to the existing set of theories. So if you see current day scientific inquiries, we try to like, merge so many disciplines or look for newer knowledge into the core theories. Are you guys okay with my pace? Understanding what I'm speaking? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes. Great. So like, Yes, madam. okay, Yes, madam.
Ask questions about the observations and gather the information, form a hypothesis, and then a tentative description of what is going on and what is observed. Test the hypothesis and generate through means of some kind of an experiment. So coming back to this, the research process is driven by a research question, right? So I would rather have a research question in hand, and I would have a defined process in hand wherein I can work on a research question or derive a So I have some predefined hypotheses which I would like to test, or I would have some new hypothesis which I need to create, right? And that is the whole process which is defined by the subject of research. So if I say research, it is the process of gathering information for the purpose of initiating, modifying, or terminating a particular investigation. So here, if you see the process, how do I do this particular research? So the process is by defining a problem. From diverse backgrounds, you can as well very well assess that for every there would be some research problem in hand, right? So for any research problem in hand, what you start with is you would like to review the existing literature which is available for that particular problem at hand. And depending on the problem at hand, then you will be formulating a hypothesis. The hypothesis will be a larger question which you would like to derive an answer for. And then you will work on the design of the research. That if I have a question at hand, so there would be one broad question at hand. The broad question will have some sub questions at hand, and the sub questions will give you the pathway for how are you going to answer those questions, or how are you going to design solutions for the questions at hand. And depending on the design research, design methods of data collection, you will be collecting formal data on the subject at hand. And once you're able to analyze that particular data, you will interpret it. And again, if you see, there is a feedback loop that will help to sort of redesign the whole thing, or feed forward in terms of some more criteria of evaluation will come into the picture, right? So as you see various kinds of research, the basic process of doing research more or less remains the same, right? So for any, if you see let me explain with the help of an example, right? So if let's suppose the pollution control board wants to monitor and maintain certain parameters related to air quality. So their research problem is they want to measure and monitor air quality, right? So out of their review literature, they know that there is certain set of instruments by which they can measure certain parameters of the air quality. They can measure parameters like the CO2, they measure NO2 or sulfur or whatever, whatever be these subcomponents. So the review of literature tells them that these are the instruments. Review of literature tells them this is the way to monitor these numbers, right? And then on the basis of them, the question at hand, they formulate various hypotheses. So they design a data collection scheme. So they set up the instruments and they set up the methods. Their research design is the experimental. Like to set up instruments, collect the data, analyze it, interpret and report the same, right? So if you are a social scientist, you would like to know what is going on in a social context. You would like to define a livelihood problem. If you are a climate scientist, you would like to define, what has happened in the past. For the past 30, 40 years, what has been going on. And if this continues on the basis of some mathematical model, what is going to happen in the future? And if this is what is going to happen in the future, how do I put up cross checks? What are the methods? Some hypothesis would be, maybe transitioning to electric cars would help, reducing the GHG emissions. So for a larger research problem, there would be so many sub problems
for which you will be driven by sub questions. That is, you will be formulating certain set of hypotheses. And on the basis of the hypothesis, you will be designing a research method. And on the basis of the collected data, you will be able to generate some kind of a outcome. So understood what it is? The process? Any doubts in the process? Ma'am, I have a question. While defining the research problem, how much intuition works in this situation? Like how we are going to work on the problem? So it does, intuition in the sense, your own sense of or existing know-how of certain things, right? Yeah. Like like what we are thinking of the outcome, like what results we are expecting from this, and what might be the outcome from the how we should process the research. Like all the things that we are trying to formulate, we are basically trying to make a pathway to get the particular sort of result which we have in our mind. So how do we process that? So see, if you see, research is largely driven by intuition only. There would be, when you start your process of PhD, there are 1,000 questions that spark your interest, right? That I can do this, I can do that, I can, work on this particular thing. Ultimately, when you start building the review of the literature, then that feeds to your intuition saying, I thought of this problem this way, but after reading this particular literature, maybe this is not the way it can be solved, right? There are alternate mechanisms to solve this particular problem, right? Or I should look for alternate, ways, or or might be your intuition tells you now this is the pathway, right? This is the unexplored path which I need to take, and I would derive a solution out of it here itself, right? So it is driven by the research question or the intuition. What is it that you want to study? What is it that ignites your interest? But then the review of literature feeds to your interest in terms of your know-how of how things work, right? You actually supplement your knowledge and feed back to your intuition, and then further knowing more and more gives you the set of directions to go to. Did I answer your question? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Any more doubts? So that this process remains the same, whether you're a climate scientist, whether you work on experiments, whether you work on you're a physicist, you are whatever, right? You will be, the process remains the same. You'll review the literature, you'll formulate the hypotheses, you will design the research. Now, this particular part, the design the research part, is something that that is different for every kind of scientist, right? So if I'm a social scientist, my way of designing research would be, how will I collect my data? How will I identify the indicators? How, on the basis of the identified indicators, will I collect the data, right? So if I'm from the a scientist who work on rural livelihoods, my questions would be a little different. If I am a physicist, I would like to look for possible instrumentations that can help my experiments. If I am a bioinformatician, I would look for possible computational techniques that can help my biological problem. Okay? So the design of the research is something which is like a prescription by a doctor, right? So depending on the problem or the context, the research design completely changes. It is something that changes with the question at hand. So यदि आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, बट आपसे आपकी पूरी हिस्ट्री भी जानता है, समझने की कोशिश करता है, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, आपकी कोई पास हिस्ट्री तो नहीं है, या कोई और पर्टिकुलर डिजीज से डेराइव तो नहीं है. So on the basis of that, if you see the way the doctor diagnoses a problem, similarly a researcher also diagnoses a problem. It reviews the literature, studies all the secondary data available, that means reads all the relevant reports, relevant questions and stuff like that, so that a structured plan or a structure or a strategy for the investigation is conceived, right? So on the basis of the research questions at hand, I am create a sort of a procedural plan, that this is how I intend to address this particular problem, right? So the doctor also tells you investigations, blood tests kara lein, ye kara lein, wo kara lein, right? On the basis of various investigations and reports,
maybe get an MRI done or a CT scan done. And then, I get to understand what is going on in your body, and then I prescribe a solution. So similarly, if you see a research design, you formulate it, you design it on the basis of the question at hand or the problem at hand and available possible solutions or the way other researchers have solved a particular problem. Or if you see a problem in the way the other researchers have addressed the problem, and you know another alternate solution by which you can supplement the problem or solve the same problem in a better way, you design the plan for it. So that's the blueprint or the procedural plan by which you will be collecting the data, right? So you design the research accordingly, right? So I'll give you one example of my own project, that is the Climate Smart Village project, right? So the government of MP comes up with this intervention and says, I will be, we will be setting up 60 smart villages. We will be giving them all the inputs in terms of training. We will give them drought resistant seeds. We will give them training on to zero tillage. We will train them into various practices which could be, deemed as climate smart in terms of building their resilience to any climate adversity, which will ensure their yields in case there is a climate risk, right? You go to farmers and says that you try to grow more crops so that your dependence on a single crop reduces, right? So there is already a design process or some research which is going on that what might help the farmers in mitigating all these challenges, and the solution needs to be evaluated, right? So from my side, the research question is, how do I monitor what is going on the ground, right? From my side, how do I measure the impact? How do I calculate whether giving a drought resistant seeds has actually helped the farmer in ensuring its produce? For me, the question is how far the project has penetrated in this particular villages, right? So on the basis of the question at hand, I design a procedural plan. I look for what does the World Bank tell me? How do I do an MNE, right? Or how do the practices which are relevant in the social science sector tell me how to evaluate a program, right? So then the review of the literature tells me that this is how a program needs to be evaluated, right? So for any development project at hand, you must measure how much outcome it has been able to meet, how much resilience it has been able to build for the farmers, right? So on the basis of that, I will be designing the procedural plan or the data collection scheme. So from my side, the data collection scheme would be the yield of a farmer before and after the particular project, right? But for me, designing this particular person, I can go and collect this data on a day-to-day basis for the cost-related constraints. Right? So if you see a procedural plan, I have sort of a blueprint on how I will collect this data, right? Will I be able to bear for collecting all this information? And then how am I going to look at this particular data and derive all the answers that I need the data to answer? Ultimately, in statistics, we say that you torture the data till it confesses. Right? So if you see data analysis strategies, they are nothing but ways to derive information from data. You see, from the perspective of a social scientist, first you need to formulate a social science problem, translate it into a data problem. Then only you'll be able to derive the solution. Right? So all of you are aware of this topic here? That's something, an operation done by the Ministry of Planning. Are you aware of something called the National Family Health Survey, NFHS? Do you see all these newspaper articles in terms of the economy? Yes, please. आप सभी ने वो देखे होंगे ना जो न्यूज़ आते हैं बेरोजगारी से रिलेटेड? Yes, ma'am. Right? So this is ministry. Yes, ma'am. And there is a full-fledged operation every 10 years, which is called the Census of India, which counts every account.
everyone in is a member of the Indian citizen, right? So, see, there are ways to, inform, create and collect. You see, the government's perspective of Can others please go on mute? So if you see from the government's perspective, the data collection would be like, their real questions are, what is the state of inflation? What is the state of economy? What is the state of people livelihood, right? What is the state of people's health? So if you see the overall body called the Niti Aayog, it has to formulate the hypotheses and, identify the problems of the nation and see and conceive design solutions which were enable to give solutions to day-to-day problems, right? What could be done to curb down inflation? What could be done to what is the check on the fuel prices, right? How does the cost of the commodities go? And all the whole, if you see from everybody's perspective, the research question at hand is different, right? And if you see this Ministry of Planning and Statistics, or if you see Niti Aayog, they design mechanisms, metrics, and indicators of interest that are able to collect data and generate all these kinds of insights. So if you see research, it goes on with the help of various kinds of study designs. So all of you, any doubts with the research process part? No, ma'am. Clear. Clear? Yes. So now, if I see from the research process, I come to a research design. So research design is the way we collect data and how we take our research out, right? It's a procedural plan. So now how many possibilities of a procedural plan is something that I study here, right? So there are various ways in research methodology. We say that these are certain study designs. These are certain ways in which you can answer a particular question at hand. So the first kind of study design is called a cross-sectional study design, right? So if you see the categorization of research, it would be all of you are aware of something called a Rubik's Cube? Yes, तो ma'am. बच्चे में मिलता था ना, कलर मिलाते थे हम लोग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you see उसका एक Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा फेस दूसरे अलग तरीके से दिखता है, right? So जी, जी. उसी रिसर्च के भी कई फेसेस हैं, right? So एक तरीका है कि कैसे रिसर्च करो, what is the process of doing research. So then comes in this particular discipline called the study design, right? And if you see it from the other perspective, कोई दूसरा यदि अब क्यूब को अपने रोटेट कर दिया और बोल दिया कि ये रिसर्च क्या है, then we will say that the research could be qualitative research or quantitative research, right? So quantitative research means I have all the numbers at hand. Now I need to design a solution to find the meaning out of those numbers, right? And then there is this qualitative research. That means I have so much secondary information. I will read plenty of books and other things, and then consolidate all the existing literature and come up with newer insights into what I observe out of it, right? And then, but if you see from this perspective of the design perspective, that how do I design a particular research? So these are the ways in which it can be categorized. So while we have quantitative and qualitative research as one perspective of kinds of research, right? Another perspective, if you again rotate the cube and see it from the third perspective. So the third perspective of looking at research would be maybe experimental research is different from the social sciences research. Something that involves instruments, something that involves people, something that involves computational machines. So that is also a possible categorization of research, right? So if I see from the perspective of study design, the one categorization of research is cross-sectional research. That means I try to look for and understand a phenomenon at one particular point of time, right? So if I want to examine, if you see the census of India, so it's a one-time exercise, right? Take 2 to 3 years because you are completely enumerating the entire population of a nation.
right? So like, if you see the Census of India website, it is a pretty rich information source. For every village, you will have all the details in terms of total head counts of males, total head counts of females, total children in the 0 to 6 years age bracket, total, males, females, the social class or composition, social groups within a particular village. And even the, it's so rich, it also carries all the village facilities, whether the village has a well, if it has a well, how many wells, whether a stream flows through it, whether a river flows nearby, right? If there is a nearest town, how far is it, right? So for one village, and in the district census handbook, you have more than 150 parameters or 150 data points to study, right? So this is how a complete enumeration works. And then the government also has other kind of data collection mechanisms, like the National Family Health Survey, right? The Economic Survey of India, right? And so many other departments and divisions that keep on collecting data on a day-to-day basis or on a weekly basis, on a monthly basis. And what do? They need to understand the relevance of a phenomena. They want to understand what is the current situation. So if you see all these pollution control boards, they do what? They are every day they collect all this data related to all the pollution related parameters. And then they come up with the daily monitors. The monitors or the frequencies to hourly, hourly granulated to the 4 hourly, 4 hourly granulated to the day, day and night as well. And then, further grouped into for 1 week, 1 quarter, like that, right? So for every one shot of time, we need to understand the current situation. And then we take this cross-sectional study design. It requires one contact with the population. So if I'm doing an experimental research, I am consolidating data by every hour. So that one timestamp is an hour, right? If I'm doing social science research, then at one point of time, I want to understand, for example, there is this project funded by the UNDP, which says that we need to understand, what is the general status of livelihood and sanitation and other things in certain villages in 5 or 6 districts of India. So then they commissioned this study to some NGO who goes designs a questionnaire and understands all the parameters which are related to livelihood, all the parameters which are related to people's health, and all the parameters which are related to some other phenomena which is of interest. So are we going to the same population again in this kind of a study design? No. At one point of time, we are just collecting one particular information, analyzing the data, and presenting the report on what exists. Like the status of livelihood, I'm just telling this is the status of livelihood today. On an average, in a Kharif season or in a Rabi season, this is what is the average income of a particular farmer from the yield that he has, with. So in one particular point of time, I am trying to assess what is the situation, and that is called a cross-sectional study design. So this granularity of the period of the study could be hourly, monthly, depending on the research context, right? So even these consumer satisfaction survey reports, they are all one-time studies. That means I just make a contact with the population once. Any doubts? Any queries? No doubt, ma'am. Thank you. Now, another kind of study design is a before-after study design. So, right now, so if for any particular study, it is desired that I want to know the present state of things. So then I say that I am pursuing a cross-sectional study design, right? But then there are programs and impacts, right? In terms of so many interventions done by the government. And then after that, doing the interventions, the government wants to know the impact that I have already done an intervention. How far it has helped, right? Whether it has helped or not, that too is a question at hand, right? So this kind of a study design is called a pre-post or before-after study design, right? So what do? I test my research subjects. I ask them today that what is your situation today? And then some interventions come up in terms of helping these particular people. Yes? Jigyasa ma'am. Yes. Sometimes your voice is breaking.
No, Agree, no, ma'am. he- Agree, ma'am. he I So agree. says it is not completely clear, and audible. we cannot get it. What are you saying? Sometimes. Okay. For me, you are okay. There are, I actually don't know what are there are times, I don't know what kind of limitations. Maybe my stopping my video would help. या मैम आप वीडियो स्टॉप कर दीजिए प्लीज. हाँ. Uh, that would maybe generate a better bandwidth. Yes, ma'am. Better comparing with the last time. So, you able to see my screen? Yes, ma'am. So then we come to this particular study design, which is called the before and after study design. So whenever we are putting up any interventions which are related to program improvement or any adaptive action done by the government, right? Or anything, like I'm giving examples of social science, otherwise also when we do experimental studies as well, right? So we put up pollution monitors, we sort of come up with some interventions in terms of giving some filters to the industry to put in their instruments and units so that the emissions are reduced. So if we try to measure some program interventions happens, and I try to maintain a contact with the population before an intervention and after a particular intervention, then I study this the same matrix of interest are studied before the program intervention begins and after the program intervention. This kind of a study design is called a before after study design, right? It's also called the pre-post design. So it is useful for measuring the change in the situation, or whether any intervention has helped, or whether any issue has been addressed or not addressed, etc., etc. So all these metrics of interest are measured before the interventions and after the intervention. So the same population is contacted 2 times. Got it? Yeah. So can you appreciate the difference between before after study design and cross-sectional study design? Cross-sectional, I maintain a contact with the population only once. And before after study design, I study the same population before and after a particular intervention. Can you appreciate the difference between the 2 study designs? Okay. 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 No questions, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your detailed presentation about research methodology. Now ma'am, I have some other engagement, so she will not with us continue session. So now we proceed to our next session. Just let me know the time when I can, reconnect. Right now, I have to just leave for another urgent meeting. Yeah. We will continue this session and I will share the lecture notes and PPT, etc. Okay. Hello. Thank you, madam. Thank Yes. you, Jigyasa, ma'am. Hello, ma'am. Your next session will be on 12:45, ma'am. 12:45. Okay, that works well. Thank you. Great. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Now it's my great pleasure to introduce Dr. Praveen Tamot, sir. Dr.
Praveen Tamot is professor and head Department of Geology and Technology, Government Maharani Lakshmibai Girls Postgraduate Autonomous College, Bhopal. Having 30 years of research and teaching experience, completed more than 10 major research projects funded by Government of India and state government, published more than 50 papers in international and national journal in the field of environment, biodiversity, fisheries, and 14 students awarded PhD, and also served as a joint director in MP Council of Science and Technology for more than 6 years. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Praveen Tamot, sir, to start the session. Thank you, sir. Good morning. Thank you very much, Aarti. Thank you, sir. Yeah, this is Dr. Praveen Tamot. I am professor and head in Department of Geology and the Biotechnology in Government MLB College, Bhopal. This is my first lecture in this batch, that PGDEM batch. I am audible? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wait a minute, Yes, sir, yes, मैं PPT इसको लिंक कर लूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है? मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है PPT? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah, thank you. एफकोर्स से मैं लगातार पिछले 30 साल से एसोसिएटेड हूँ। लगातार पीजीडीएम के जब से कोर्स शुरू हुए हैं तब से मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है इसमें। खासतौर से मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन इंग्लिश में पसंद करेंगे या आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स चलेंगे, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट साइंस बैकग्राउंड के भी होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के भी होते हैं, साइंस बैकग्राउंड्स के भी हैं, कुछ आर्ट्स कॉमर्स के भी होते हैं पार्टिसिपेंट, तो सबको कंफर्टेबल रहे वही देख के चलते हैं। एनीवे, आज जो थोड़ा सा रिशेड्यूल हुआ है, मेरा 12:45 पर था, लेकिन इनका आरती का फोन आया कि कुछ जिज्ञासा मैडम को दिक्कत है, तो फिर मैंने रिशेड्यूल कर लिया है और आपके बीच जल्दी मौजूद हो गया हूँ। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इंटरेक्टिव मोड में रहेंगे हम लोग आपस में सब एक दूसरे से। बेसिकली जो टॉपिक रहेगा मेरा, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ओवरव्यू। रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन पेपर 4, that is unit 7 in paper 4. So we are discussing about what is the research, what is the research methodology, क्योंकि अधिकांशता पीजीडीएम कोर्स में सभी को आपको डिसर्टेशन सबमिट करना कंपलसरी है। तो डिसर्टेशन जिस वक्त हम लोग बनाते हैं उस वक्त रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर लूं आपके बीच डिस्कस करके, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा आपका इसका डिसर्टेशन का, उसमें हम लोगों को कंफर्टेबल। तो वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर अबाउट व्हाट इज रिसर्च, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द कैरेक्टर्स and the types of research. Now the second important note is that variables, that is research design, sampling design, and the sampling methods. These 3-4 topics we can cover under this main head, the research methodology. रिसर्च के बारे में जब हम बात शुरू करते हैं तो एक बहुत अच्छा कोटेशन महात्मा गौतम बुद्ध का दिया हुआ है कि व्हाट इज रिसर्च। सर्च क्या है? साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हम जब बात करते हैं तो विज्ञान हम उसको कहते हैं, रिसर्च हम उसको कहते हैं जो हम खुद करके देखें। वही गौतम बुद्ध ने भी कोट किया था कि अंधविश्वास कभी किसी पर मत करना, भले वो धर्म, ग्रंथ या किसी महानुभाव का कहना हो, जब तक वह तुम्हारी अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। कुल मिला के इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम उस चीज पे विश्वास करें जो या तो हमने खुद करके देखी हो या उसको प्रूव कर दिया गया हो पहले साइंटिफिक एनालिसिस से, साइंटिफिक डेटा के माध्यम से, और ऑब्जर्वेशन जो रही है उसका। रिसर्च के मामले में ये बीच में क्यों? हाँ, थैंक यू, सॉरी फॉर इंटरप्शन।
ये क्यों आ रहा है बीच में? एप्को से जो भी डील कर रहे हैं लगातार नाम आ रहे हैं बीच में। ओके, how we can define the term research? Re is prefix meaning again, or new, or over again. Search is a verb meaning to examine closely and carefully, to test and try, or to prove investigation. बहुत संक्षिप्त शब्दों में हम कहें तो रिसर्च जो है that is journey from unknown to known. पहले अक्सर मजाक में कहा जाता है जब लोग पीएचडी कर रहे होते हैं या अपना डिसर्टेशन कर रहे होते हैं एमफिल का या पीजीडीएम का, ये साहब इस पे तो काम हो चुका है, फिर हम वही चीज सेम टॉपिक पे हम अगर सबमिट करेंगे तो वो अप्रूव होगा या नहीं होगा। यहाँ मैं बड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो डाटा जनरेट हो चुका है वो उस पर्टिकुलर पीरियड का था, चाहे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी रहा हो उसका, और उस डाटा को यूज करते हुए अगर हम अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान संदर्भ में फिर उस डाटा को यूज करते हैं और अपना इनपुट अगर हम उस डालते हैं तो वो भी रिसर्च है। जो सर्च पहले हो चुकी है उसको मॉडिफाई करके अगर हम उसका उपयोग करें तो वो सर्च है, और अगर उस फील्ड में काम नहीं हुआ है, दैट इज अननोन, तो उसको ज्ञात करने के, नोन होने के लिए जो भी हमको मेथोडोलॉजी यूज करना पड़ती है, दैट मेथड इज नोन एज द रिसर्च मेथोडोलॉजी। मेरे ख्याल से रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं कि रिसर्च में हम किन किन चीजों का समावेश कर सकते हैं और रिसर्च किन चीजों से मिलकर होती है। तो रिसर्च इज दैट इज फॉर सर्च फॉर नॉलेज, हम ज्ञान को खोजने के लिए रिसर्च करते हैं। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, किसी भी वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेट करने को उसकी एक आर्ट है। इट इज केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। जो हो चुका है वो अपनी जगह है, कुछ नए फैक्ट के साथ अगर हम उसकी फिर से स्टडी करते हैं और उसके कुछ नए परिणाम मिलते हैं तो दैट इज आल्सो रिसर्च, which a person employs for obtaining the knowledge of whatever the unknown can be termed as research। वही जो मैंने कहा था पहले कि किसी भी अज्ञात चीज को जानना, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना, that is research। It is an investigation of findings। I am audible? आवाज आ रही है मेरी ठीक से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, उनका कहीं नेट का इशू तो नहीं है थोड़ा सा इसमें। It is an investigation of findings, solution to the scientific and social problems through systematic analysis. It can lead to new contributions to the existing knowledge. This is very important। जो existing knowledge है उसको अगर हम और अपडेट करते हैं, उसमें कुछ नया कंट्रीब्यूट करते हैं, तो that is also research। To develop a new scientific method, concept and theories to solve the scientific and non-scientific problems। मेथोडोलॉजी हम डेवलप करें, नया कंसेप्ट तैयार करें, थ्योरीज तैयार करें, वो चाहे साइंटिफिक फील्ड हो या नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हो, दैट इज आल्सो रिसर्च। इन्वेस्टिगेशन यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स टू सर्चिंग अगेन एंड अगेन टू फाइंड आउट द ट्रूथ। मैं थोड़ा सा इसमें जानना चाहूंगा, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमारे इसमें है प्रोग्राम में, इसमें किस बैकग्राउंड के, कुछ डाटा है आपके पास के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कितने हैं, साइंस से कितने हैं, आर्ट्स कॉमर्स से कितने लोग होंगे, कहीं कुछ है इस तरीके का? जो पीजीडीएम में मेरे पार्टिसिपेंट हैं हमारे इस कोर्स में इस साल, मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं सर। अच्छा, मोस्ट ऑफ फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। व्हाट अबाउट द कॉमर्स सब्जेक्ट्स एंड द साइंस? एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन सर करवा सकते हैं पार्टिसिपेंट का, तो हमने वो तो फिर टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। खैर एनीवे, क्योंकि व्यवहारिक प्रॉब्लम्स क्या आती है हम लोगों को, जब ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं तो वहाँ आमने सामने होते हैं हम आपके बीच, ठीक है ना, तो उस डिस्कशन का कुछ मजा अलग होता है। ऑनलाइन में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। मैं वही जानना चाहता हूँ, पहले जो पीजीडीएम में हमारे पार्टिसिपेंट हुआ करते थे
उसमें इंजीनियरिंग के तो होते थे, लेकिन आर्ट्स कॉमर्स के और दूसरे नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी बहुत लोग होते थे। तो थोड़ा सा हमको अपना प्रेजेंटेशन उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है कि वो व्यवहारिक रूप से सभी के लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए हो सकता है बहुत बेसिक चीज हो, लेकिन साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड के भी है सर, हाँ, डाइवर्स यस, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है, मैं हूँ। है, कॉमर्स से भी हैं, आर्ट्स से भी हैं कुछ लोग क्या? हाँ सर, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी है सर, और ये आपकी जो पद्धति है सर वो बहुत अच्छी है सर, सारे तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग कैच कर पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए फिर ठीक, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, ऑफलाइन में तो हम आपके सामने होते हैं जब बोल रहे होते हैं, ऑनलाइन में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, थोड़ी सी मजबूरी होती है उस चीज को समझने में। अगर ये लेक्चर में एप्को में दे रहा होता, क्योंकि अभी तक देते रहे हैं हम लोग एप्को में, तो आमने सामने डिस्कशन होता रहता है उसमें। एनीवे मैं इसीलिए कोशिश करूंगा कि सबको लेके साथ चलूं, आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए भी कंफर्टेबल हो और इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी वो क्लियर रहे। इसलिए बहुत जरूरी था कि रिसर्च के बारे में थोड़ी सी अवधारणाएं भी हैं, बहुत अधिक अवधारणा रहेगा नहीं था, जो काम हो चुका अब हम उसमें कैसे करें काम। सपोज आप चूंकि एनवायरनमेंट के फील्ड के हैं, भोपाल के रेफरेंस में अगर मैं बात करता हूं तो भोज वेटलैंड यहाँ पर है, बड़ा तालाब छोटे तालाब को मिला के भोज वेटलैंड के नाम से वो जाना जाता है। भोज वेटलैंड से करीब 200 पीएचडी थीसिस प्रोड्यूस हो चुकी हैं। उसके बाद भी लगातार कई पीएचडी मेरे अंडर में ही प्रोड्यूस हुई है बड़े तालाब के ऊपर, और लगातार अभी भी काम चल रहा है। एप्को का बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट था भोज वेटलैंड। अब मुद्दा ये आता है कि हर बार लोग बड़े तालाब पे ही थीसिस क्यों कर रहे हैं? भोपाल के लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अपर लेक या एक वाटर बॉडी जो है वो इतनी सारी रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए ओपनिंग देती है। कोई बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को लेकर काम करने लगता है, कोई फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर काम करने लगता है, कोई केमिकल एस्पेक्ट की संभावनाएं है, सोशल एस्पेक्ट की संभावनाएं है, फिश कल्चर फिशरीज की संभावना है। तो मल्टीपल फील्ड्स एक वेटलैंड के माध्यम से, एक तालाब के माध्यम से खुलते हैं। फिर जो काम पहले हो चुका है उसको अपडेट करने की भी हमको यहाँ गुंजाइश रहती है। इसीलिए ये रिसर्च के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे मैंने आपसे डिस्कस किया और उसको क्लियर किया कि रिसर्च का मतलब ये नहीं कि एक बार जो हो चुका है हम अब उस पर कुछ नहीं कर सकते। उसके नए एस्पेक्ट्स को लेके, नई संभावनाओं को लेके हम फिर से नए सिरे से उसमें काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन डिफाइन की है, दैट इज क्लिफोर्ड वुडी के द्वारा दी गई है, दैट रिसर्च कंप्राइजिंग डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। Research comprising defining and redefining problems, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making direction and reaching conclusion, and at last carefully testing the conclusion to determine whether they fit the formulated हाइपोथेसिस। डेफिनेशन जरूर कुल 3 या 4 लाइन की है, लेकिन आप देखिए इसमें कितने सारे कंपोनेंट्स का समावेश किया गया है। दिस इज टोटल नोन एज द रिसर्च मेथोडोलॉजी। दिस इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी विच इज गिवन बाय द क्लिफोर्ड वुडी। बहुत अच्छे से डिफाइन किया उन्होंने। रिसर्च कंप्राइजिंग डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम। जब भी आप रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट होगा। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्ट विच इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम जिस पे हम काम करने के लिए जा रहे हैं। जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, ऑब्जेक्ट तय कर लिया आपने, तो उसकी आपको हाइपोथेसिस तैयार करना पड़ेगी। एक अवधारणा जो हमारी है, हम किस लाइन में, किस डायरेक्शन में उसको अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, उसके सॉल्यूशन ढूंढना होगा। प्रॉब्लम से संबंधित हमको डाटा कलेक्ट करना होगा, उसको एवेल्यूएट करना होगा, और फाइनली जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशंस रही हैं उनका इंटरप्रिटेशन करते हुए, उस डाटा को देखते हुए हम एक किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। वो जो कंक्लूजन होगा वो हमारा फाइनली रिजल्ट एंड डिस्कशन होगा।
हमारा निचोड़ होगा उस पूरी रिसर्च का जो हमने काम किया है, और उसको फिर आप रिकमेंडेशंस के फॉर्म में आपके पूरे वर्क को आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये इस टोटल डेफिनेशन में सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के। दैट इज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मींस ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई जो हमने किया है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, दैट इज मेथोडोलॉजी, collecting data, that is observation, evaluating data, this is discussion, and finally conclusion, and we can say the recommendation. ये सारे components इस एक definition के अंदर समाये हुए हैं, उसके अंदर विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। What are the important characters of research? कोई भी शोध का काम करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, उसकी अवधारणा क्या है? बेसिकली रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई की है, उसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के द्वारा एक निर्णायक स्थिति में पहुंच पाए, उसका हम सॉल्यूशन ढूंढ पाए, ये हमारा डायरेक्शन होना चाहिए रिसर्च के लिए। इट एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन, principles, theories that will helpful in predicting future occurrences। जो उस ऑब्जेक्ट, उस प्रॉब्लम को लेकर सिद्धांत हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो हैं, थ्योरी हैं, उन सब की सहायता से हम भविष्य के जो रिजल्ट्स हैं उन पर फोकस कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। रिसर्च डिमांड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। रिसर्च इन्वॉल्व gathering new data from primary sources or using secondary data for a new purpose। यूटिलाइजेशन ऑफ डाटा का एक अलग से चैप्टर है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिटेल में। लेकिन रिसर्च में प्राइमरी डाटा का और सेकेंडरी डाटा का दोनों का उपयोग किया जाता है। प्राइमरी डाटा वो है जो हमने खुद जनरेट किया है, और सेकेंडरी डाटा वो है जो किसी और के द्वारा किया गया है, लेकिन उस डेटा का उपयोग आप अपनी रिसर्च के लिए कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डाटा। रिसर्च रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, रिसर्च स्ट्राइव ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। जो आप काम कर रहे हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। रिसर्च इज कैरेक्टर्ड बाय द पेटेंट, इट इज केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। जो आपने डाटा तैयार किया है वो अच्छे से रिकॉर्ड किया हुआ हो, प्रॉपर वे में अरेंज किया हुआ हो, और इन सब चीजों के साथ जो चीज हमने आइडेंटिफाई की है, जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है, जिस वक्त हमने आइडेंटिफाई की है, उस वक्त दैट बाय द अननोन प्रॉब्लम, उसको हम नोन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं इस रिसर्च के माध्यम से। रिसर्च मेथोडोलॉजी की स्टेप्स क्या है? जब आप कोई डिसर्टेशन का काम करना शुरू करेंगे या कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, हो सकता है इसमें इन पार्टिसिपेंट में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े होंगे जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा होगा। तो कोई प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, कोई रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए, या हमको डिसर्टेशन तैयार करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो जो मैंने क्लिफर्ड की डेफिनेशन दी थी, उसमें जो कंपोनेंट्स आए थे उन्हीं को यहाँ से फिर रीडिजाइन हुआ है, और जो रिडिजाइन किए हुए स्टेप्स हैं, दैट इज डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको डिफाइन करना होगा। देन सर्वे ऑफ लिटरेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, कि जो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है उससे संबंधित काम किन किन लोगों के द्वारा किया जा चुका है और उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस क्या रही हैं, दैट इज नोन एज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि पहले जो काम हो चुका है उस प्रॉब्लम से संबंधित, ताकि उनका सेकेंडरी डाटा आपके डाटा से आप मैच कर सकें उसको, और अगर सपोर्टिंग है तो रिजल्ट्स कुछ और आएंगे, और अगर आप उससे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, उससे हटके रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, तो भी रिसर्च है। वो जरूरी नहीं कि पहले जिसने कहा है वही चीज आप भी करें। हो सकता है आपका डाटा उससे मिसमैच हो रहा है, लेकिन उस मिसमैच होने के क्या कारण है वो भी अपने आप में एक रिसर्च है। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट्स, एक हाइपोथेसिस आपको तैयार करना होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिसाइडिंग ऑन द रिसर्च डिजाइन, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी,
कि आप जो एक्सपेरिमेंट या आपने जो पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए हैं इसका क्या तरीका रहेगा, कौन सी मेथड्स रहेंगी। फॉर एग्जांपल, हम कोई स्टैंडर्ड मेथड्स यूज कर रहे हैं जिसको साइंटिफिक कम्युनिटी ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज की हुई हो। जैसे एनवायरनमेंट के फील्ड में अगर हम वाटर क्वालिटी असेसमेंट की बात करते हैं तो वन इज अ स्टैंडर्ड बुक जिसको पूरी दुनिया में मान्यता दी गई है, दैट इज नोन एज द APHA एंड AWWA। उस बुक में जो मेथोडोलॉजी डिफाइन की गई है, उस मेथड्स को अगर हमने अप्लाई करते हुए अपना डाटा जनरेट किया है तो वो स्टैंडर्ड डाटा माना जाएगा। ये माना जाएगा आपने कि स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी के तहत आपने एनालिसिस किया है, आपने जो सैंपल्स थे उनका एनालिसिस स्टैंडर्ड मेथड्स के माध्यम किया है। दैट मेथड इज नोन एज द APHA, दैट इज अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, एंड AWWA, अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, APHA एंड AWWA। और उस बुक का टाइटल है स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर। इसमें जो मेथोडोलॉजी दी गई है डिफरेंट पैरामीटर्स के एनालिसिस की, वो पूरी दुनिया में उसकी मान्यता है, उनको स्टैंडर्ड मेथड्स कहा जाता है। देन सिलेक्टिंग ऑफ द सैंपल्स, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सैंपल्स कब कलेक्ट करेंगे आप, सैंपल का साइज क्या होगा, और जो आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई की है वो सीजनल बेसिस पे कर रहे हैं आप, मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे कर रहे हैं, या डेली उसके आप सैंपल्स कलेक्ट करके उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी और साइट सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको काम करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी, दैट इज कलेक्टिंग डाटा। द सैंपल मस्ट बी ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो हमारी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की थी, सपोज अपर लेक इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि हमको उसका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट देखना है या वाटर क्वालिटी असेसमेंट करना है। तो अपर लेक के साइज को देखते हुए हमने कितने सैंपलिंग साइट्स चूज की हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही जगह से वाटर सैंपल ले लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे तो पूरी लेक को वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हमको डिफरेंट सैंपलिंग साइट लेना पड़ेंगे, डिफरेंट सैंपलिंग साइट्स में वाटर क्वालिटी असेसमेंट आपका अलग अलग आएगा, और उसकी वजह भी होगी। कुछ हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक पॉइंट्स हो, कुछ पॉइंट पॉल्यूशन सोर्स हो, कुछ नॉन पॉइंट पॉल्यूशन सोर्स हो, उसकी वजह से वाटर क्वालिटी आपकी चेंज आएगी। इसलिए अलग अलग सैंपलिंग साइट्स को चुनते हुए फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस के बाद फिर हम किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि क्या स्टेटस है। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, फिर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, जो आपने मेथोडोलॉजी यूज की थी, जो हाइपोथेसिस तैयार की थी, वो इसके लिए सपोर्टिंग हुई या नहीं हुई है। फाइनली योर डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ योर डाटा हम कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। इस रिसर्च का जो उद्देश्य था, जो आप सोच के चले थे, उसमें हम कहाँ तक सक्सेसफुल हुए हैं, कंक्लूड क्या कर रहे हैं, रिकमेंडेशंस इससे जनरेट होकर निकलेंगी, और इसी के आधार पर आपके अपना डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर या प्रोजेक्ट्स तैयार हो पाएगा। These are the important steps which are involved in conducting research. बहुत सिंपल वे में देखते हैं तो रिसर्च के बारे में हमने काफी कुछ क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को कवर किया है कि रिसर्च क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी स्टेप्स क्या होती हैं। लेकिन रिसर्च भी कई प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ रिसर्च की हम जब बात करते हैं तो 6-7 तरीके की इंपॉर्टेंट रिसर्च होती हैं, जिनके बारे में बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे हम लोग। पहला है जो दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसा नाम से ही लग रहा है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन हो इसके अंदर, इज वन विच डिस्क्राइब्स, रिकॉर्ड्स, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कंडीशन ऑफ द एग्जिस्ट। इट बेसिकली डिस्क्राइब व्हाट इज, क्या है। इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। द रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, he can only report what is happened or is happening। जो आपके पास मटेरियल दिया गया है, जो भी मटेरियल, इसमें हम खुद कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास ऑलरेडी सेकेंडरी डाटा मिल रहा है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, उसको हमें एनालाइज करना है। सिर्फ उसका एनालिसिस करते हुए हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। द सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च इज
Analytical research. Analytical research means the researcher has to use facts or information already available and analyze this to make a critical evaluation of the material. आपके पास डेटा मिल जाता है, एनालिसिस किया हुआ ऑलरेडी रहता है, चाहे वो लैब के द्वारा किया हुआ हो या किसी दूसरे माध्यम के द्वारा किया हुआ, आपको उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करना है। तीसरा अप्लाइड या एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, जिसकी आजकल बहुत डिमांड है और हम कहते हैं कि हमारी रिसर्च जो हो रही है वो अप्लाइड एस्पेक्ट को लेकर हो रही है। अप्लाइड एस्पेक्ट जो है रिप्रेजेंट करता है एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक बहुत बड़ी समस्या आ गई हो, उस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। वो पब्लिक इंटरेस्ट में भी हो सकता है, सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी हो सकता है, या किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर भी हो सकता है। लीड्स थ्रू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन बाय द लोकल पीपल एंड बाय द रिसर्च टीम। देखिए आप, कोरोना वैक्सीन की जरूरत थी पूरी दुनिया को, उस पर बहुत तेजी से रिसर्च हुई है, बहुत कम पीरियड में, बहुत ही कम पीरियड में, विद इन फ्यू मंथ्स उस वैक्सीन को तैयार कर ली गई। फॉर्मूला इन प्रिपरेशन ऑफ द कोरोना वायरस वैक्सीन, ये अप्लाइड रिसर्च का ही एक भाग है। इन अ नॉर्मल वे वैक्सीन तैयार करने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन क्योंकि हालात पूरी दुनिया में कोरोना का फैक्टर इन्वॉल्व हो गया था, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी, मॉर्टिलिटीज हो रही थी बहुत ज्यादा, तो साइंटिफिक टीम ने उसका कॉम्पैक्ट करते हुए बहुत फास्ट अपने टेस्ट लगा के एनालाइज करके कुछ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट किए, पहले एनिमल्स पे किए जाते हैं, फिर ह्यूमन पे टेस्ट किए, और जब देखा नो नेगेटिव इफेक्ट, दैट इफेक्ट इज ओनली पॉजिटिव, कोरोना से लड़ने में सक्षम है वायरस हमारी वैक्सीन है, तो उसको फिर मार्केट में लॉन्च कर दी गई और लोगों को उपलब्ध करा दी गई। लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में जो रिसर्च की गई है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए की गई है, वो अप्लाइड रिसर्च या एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च के अंतर्गत आ जाए। फंडामेंटल रिसर्च बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानी जाती है। जब हम बेसिक सब्जेक्ट, फंडामेंटल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हो गए। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या और दूसरे फील्ड्स के इस तरह के सब्जेक्ट जो होते हैं वो अप्लाइड सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो जब फंडामेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं, इट्स मेनली कंसर्न विद द जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी, गैदरिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। इट इज आल्सो कॉल्ड थ्योरेटिकल रिसर्च। थ्योरी के पार्ट को लेते हुए हमारे द्वारा कोई रिसर्च किया है, वो थ्योरेटिकल, वो फंडामेंटल रिसर्च होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बिहेवियर पे हम काम कर रहे होते हैं, एनिमल बिहेवियर पर हम काम कर रहे होते हैं, तो दैट इज बेसिक रिसर्च और द फंडामेंटल रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहां क्वांटिटी इन्वॉल्व हो बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट, इट इज एप्लीकेबल टू फिनोमिनन दैट कैन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट बाय वॉल्यूमेट्रिक, इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं, वॉल्यूम वाइज कैलोरीमेट्रिक से कर सकते हैं, और दूसरे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स इस तरह की और होती हैं। क्वालिटेटिव में क्वालिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा। इट इज कंसर्न विद द क्वालिटेटिव फिनोमिना, दैट इज फिनोमिना रिलेटिंग टू आर इन्वॉल्विंग क्वालिटी और काइंड। फॉर एग्जांपल, डिटेक्शन ऑफ द कंपाउंड बाय फिजिकल और केमिकल टेस्ट, data can be collected by unstructured or semi-structured techniques. क्वालिटी कंट्रोल की जब हम बात करने लगते हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च की हम बात करते हैं, तो उसमें यही टाइप रहेगा कि हम किसी चीज का डिटेक्शन कर लें, उसको हम ज्ञात कर लें फिजिकल या केमिकल मेथड्स के द्वारा, तो वो वहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगी। कंसेप्चुअल रिसर्च, इट इज रिलेटेड आइडिया ऑफ थ्योरी जनरली यूज्ड बाय द फिलॉसफर, जो सोशियोलॉजी में होती है, फिलॉसफी में होती है, इस तरह की रिसर्च को हम कंसेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। उसमें एक न्यू कंसेप्ट इंटरप्रिटेशन होता है, एग्जिस्टिंग वंस होता है। एम्पिरिकल रिसर्च एक तरह से ऑब्जर्वेशन सी रिसर्च होती है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं आएगा। फाइनली, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च, रिसर्च इनकलकेट्स साइंटिफिक एंड इंडक्टिव थिंकिंग and it promotes the development of logical habits by thinking and organization. This is very important.
It provides the basis for nearly all government policy in our economic system. कई बार वो पॉलिसी गवर्नमेंट को बनाना होती है, चाहे वो एनवायरमेंटल पॉलिसी हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन एक्ट हो, उन सब का आधार कहीं ना कहीं हमको R&D के द्वारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के द्वारा जनरेट करना होता है, और उन रिसर्च के बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे हम कोई पॉलिसी तैयार कर पाते हैं। इकोनॉमिक रिसर्च हो रही होगी तो इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार कर पाएंगे, एनवायरमेंटल फील्ड की रिसर्च के बेसिस पे एनवायरमेंटल पॉलिसी तैयार कर पाएंगे। वाइल्ड लाइफ के ऊपर अगर रिसर्च करते हैं तो वाइल्ड लाइफ एक्ट और वाइल्ड लाइफ की पॉलिसी तैयार होती है। एक बार देखिए, आपके जब जानवरों को मारना एक अपराध होता है, उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लग जाता है, दूसरे एक्ट बने हुए हैं कि आप वाइल्ड एनिमल्स को नहीं मार सकते। लेकिन पैरेलल जब दूसरा अध्ययन होता है, ये पाया जाता है कि इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज की संख्या बेहद हो गई है, और वो एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए नुकसानदायक है। तो फिर समय की आवश्यकता को देखते हुए उन वाइल्ड एनिमल्स को गवर्नमेंट की ओर से बाकायदा नोटिफिकेशन होता है कि इनको जानवरों का शिकार करने पे छूट दी जा रही है। तो ये सारी पॉलिसी जो डिपेंड करती हैं वो रिसर्च बेस्ड है। अभी कुछ दिन पहले अगर आपने पढ़ा हो कि मध्य प्रदेश में ही बारहसिंगा को मारने की अनुमति दी गई थी, शायद पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में था, वहां उनकी संख्या बहुत बढ़ गई और इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि वो आसपास के एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर कंडीशनल परमिशन दी जाती है कि इनका शिकार किया जाता है। लेकिन जब उनकी संख्या स्थिर हो या उनकी संख्या कम हो उन एनिमल्स की, तो हम उनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उनके कंजर्वेशन की बात करते हैं, उनके मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो पॉलिसी समय समय पर इन रिसर्च से जो डाटा जनरेट हो रहा है उसके आधार पर हमको चेंज करना पड़ती है, समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुरूप उनको बनाना पड़ता है। इट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस in solving various operational and planning problems of business and industry। में व्यापार में, उद्योग धंधे में किस चीज की क्या आवश्यकता है, किसकी डिमांड है, किसकी कमी होती जा रही है, इन सब का भी कंसर्निंग एजेंसीज का मेडिकल लाइन में हर अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज की अपनी R&D सेक्शन होता है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर होता है उनका। लगातार सपोज कोई फार्मा कंपनी एंटीबायोटिक्स बना रही है, एंटीबायोटिक्स समय के हिसाब से उसकी नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स बनते आ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वायरस भी अपना इफेक्ट, वो इम्यूनाइज हो रहे हैं पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए, बैक्टीरियाज। जब वो इम्यून हो जाते हैं और उस एंटीबायोटिक्स का असर उन बैक्टीरियाज के ऊपर नहीं होता है, तो उस कंपनी की जो R&D विंग है वो नए एंटीबायोटिक्स के फार्मूले को तैयार करने में लग जाती है, ताकि मार्केट डिमांड्स के आधार पर वो तय कर पाए कि वो जो बैक्टीरिया स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिए इम्यून हो चुका था, उसको काउंटर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अब हमको नए एंटीबायोटिक्स का निर्माण करना पड़ेगा। ये समय की और जरूरत के हिसाब से इस पर रिसर्च और प्रोग्राम्स अपने अलग अलग होते रहते हैं। बेनिफिट ऑफ रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो प्रोफेशनल इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, एकेडमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, और सोसाइटी का बेनिफिट तो इन रिसर्च से। आवाज आ रही है क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? जी, अभी मैं मेल कर देता हूँ। अच्छा, नहीं ठीक है, आवाज आ रही है सर, क्लियर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। जब हम रिसर्च डिजाइन की हम बात करते हैं तो 5W मैंने सिंपल तरीका यूज किया है, इसमें 5W कंसेप्ट को हम अप्लाई करें। 5W मीन्स व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड होम। ये प्रॉब्लम आप सबको आने वाले टाइम में जब आप डिसर्टेशन तैयार करेंगे तो यही क्वेश्चन अधिकांश लोगों के साथ निकल के आता है कि साहब हम क्या चूज करें, कौन सा हम टॉपिक लें। वो टॉपिक चूज करने में हर बार इतना लंबा डिस्कशन होता था सारे पार्टिसिपेंट के साथ, हम लोग कई टॉपिक देते थे, कई बार डिस्कशन होता था। फिर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो साइंस बैकग्राउंड का है उसका अपना सोच रहता है कि मैं साइंटिफिक
प्रोजेक्ट लूँ, आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड का चाहेगा, हमारे स्टूडेंट चाहेंगे कि हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करें। सोशियोलॉजी या सोशल साइंस का होगा तो वो सोशल साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को चूज करना चाहेगा। लेकिन इसके पहले हम अगर 5W कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो हम रिसर्च प्रॉब्लम को आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तय कर लें कि जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, जो आपने सोचा वो क्या है, क्यों, कहाँ, कब और किसके लिए। ये 5 पैरामीटर्स अगर हम ध्यान में लेकर चलेंगे तो जो आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे वो अच्छी भी होगी और उससे जो आप रिजल्ट तैयार कर पाएंगे वो उस उपयोग के लिए भी होगी। हमारा अपना बैकग्राउंड तो खुद का काम करता ही है, क्योंकि पहली सोच हमारी जैसे हम बैकग्राउंड से होते हैं। बैकग्राउंड मीन्स अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, साइंटिफिक साइंस बैकग्राउंड है, आर्ट्स कॉमर्स है, सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमको वो और सपोर्टिंग होगी। लेकिन ये 5 कंपोनेंट जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हुम, इन 5 कंपोनेंट से मिलकर बहुत अच्छे से रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने काम को आसानी से आगे बढ़ा पाएंगे। One can split the research design into the following parts. The sampling designs which deal with the method of selecting items to be observed for the given study. सैम्पलिंग डिजाइन करना बहुत जरूरी और अच्छे से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनवायरमेंट की हम बात करते हैं तो चलिए हम एक पैरामीटर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, वाटर क्वालिटी को ही हम ले लेते हैं। किसी तालाब की आपको जलीय गुणवत्ता का अध्ययन करना है। You are going to analyze water quality of the particular type of lake or ponds. आपने उस लेक को आइडेंटिफाई कर लिया या पॉन्ड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसमें आपको डिसाइड करना है कि मैं पैरामीटर्स क्या लूंगा इसके अंदर। आपने चूज किया सपोज फिजिकल पैरामीटर्स, आप उसका टेम्परेचर ले रहे हैं, पीएच ले रहे हैं, टर्बिडिटी ले रहे हैं, या आपने केमिकल पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई किया तो आप हो सकता है उसमें ऑक्सीजन लें, कार्बन डाइऑक्साइड उसका एनालाइज करना चाहें, हैवी मेटल्स आप ले सकते हैं उसके अंदर, क्लोराइड या जो भी अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं वो आप लेंगे। बायोलॉजिकल अगर आपने पैरामीटर चूज किया है तो हो सकता है फिश की स्टडी करना चाहें उसके अंदर, या माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स हैं उस वाटर में उनकी स्टडी करना चाहें। अब एनिमल्स का पूरी वाटर बॉडी में मूवमेंट होता रहता है, या वाटर क्वालिटी उस लेक या उस पॉन्ड्स की, क्योंकि उसका कैचमेंट काफी बड़ा होगा, यहाँ कैचमेंट टर्म में यूज कर रहा हूँ खासतौर से सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। सर आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। ये वीडियो रुक गई क्या? वो रिकनेक्ट कर रहे हैं, वेट प्लीज वेट। ओके सर। ओके सर। अच्छा स्टार्ट कर दिया आपने? जी सर। बंद हो गया था वहां से वो।
आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? यस सर ऑडिबल सर आ रही है आवाज। बीच में शायद बंद हो गई थी, जूम कुछ बंद हो रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम जो भी रही हो। क्या स्क्रीन दिख रही है? यस सर। मेरी स्लाइड विजिबल है ना? स्लाइड दिख रही है ना आपको? यस सर विजिबल सर। इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वो मेरे पास फोन आया, इसीलिए उनका आर्टिका के साथ आवाज नहीं आ रही है, तो इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट और लगेंगे। सैंपलिंग डिजाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। एग्जाम्पल मैंने आपसे अभी शायद वो मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई आप लोगों तक। अभी तो आ रही है साहब? यस सर आवाज आ रही है। चलिए, सैंपलिंग डिजाइन की बात हो रही थी। तो सैंपलिंग डिजाइन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी एक्टिविटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सैंपलिंग आपके टोटल प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करती है। सैंपलिंग डिजाइन हम किस तरीके से तैयार कर पाएंगे? मैं अभी कहा था कि हम इसके वाटर बॉडी को लेते हैं, सपोज वाटर क्वालिटी। कौन खाना खाएगा? इसको म्यूट कर लें थोड़ा सा आप लोग, नहीं तो आवाज डिस्टर्ब होगी लगातार, फिर प्रॉब्लम जाएगी। म्यूट कर लें। अब तो आ रही है मेरी आवाज? यस सर क्लियर है। हाँ, थैंक यू। सैंपलिंग डिजाइन की जो बात कर रहे थे, सपोज फॉर एग्जांपल हम वाटर क्वालिटी असेसमेंट लेते हैं किसी लेक या पॉन्ड्स का। तो हमको आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। माइक म्यूट कर ले, नहीं तो डिस्टर्बेंसेस होगा, फिर मैं अपनी बात भी नहीं कह पाऊंगा और आप लोग सुन नहीं पाएंगे ठीक से, है ना? जो एडमिन है प्लीज इस तरह के डिस्टर्बिंग लोगों की माइक बंद कर दें उधर से। हाँ, आवाज ना आए तो आप मुझको फिर इंटीमेट कर देना, अदरवाइज नहीं तो अपने माइक आप म्यूट कर दें थोड़ा सा, ठीक है? श्योर सर श्योर। थैंक यू। So we are discussing about the sampling design. So suppose we are taking one water body for the research and development activities, any lake or any ponds. जब हम किसी लेक या पॉन्ड्स को लेते हैं रिसर्च के पर्पस से, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे उसकी स्टडी कर सकता है, साइंस बैकग्राउंड वाला साइंटिफिक स्टडी कर सकता है उसकी विद रेफरेंस टू द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पैरामीटर। सोशियोलॉजी वाला सर्वे और सोशल बिहेवियर को लेके हम उस पर अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ कितने सैंपल्स आपको किस जगह से कलेक्ट करना है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि एक सैंपल पूरी उस वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एक ही तालाब की वाटर क्वालिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत गंदा पानी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। अब इसका निर्धारण करना है तो हमको इनिशियल सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे करने के साथ आपको पैरामीटर्स चूज करना पड़ेंगे कि विच टाइप ऑफ पैरामीटर यू आर गोइंग टू स्टडी। दे मे बी द फिजिकल पैरामीटर, दे मे बी द केमिकल पैरामीटर, दे मे बी द बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। अब बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में हम फिजिकल स्टडी कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो एनिमल्स का कर सकते हैं, प्लांट्स की स्टडी कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर, एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लांट या एनिमल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लांट्स और द एनिमल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस का बेसिस पर